ये सामने एलडी का स्टॉल है। रॉयल हाईलैंड शो से लाइव हूँ मैं आपको दिखाता चलूँ थोड़ी चीज़ें। अभी घोड़ों का मुकाबला ख़त्म हुआ है तो मैं इधर जा रहा हूँ, आगे थोड़ा बहुत दिखाऊँ आपको क्राउड। अच्छा प्लेस, बहुत बड़ा मेला है जी। बचपन में पढ़ते थे ना कहानियाँ, मेले में मजबूर लिखे ये कहानी। वो मेला इधर लगता है जितना हमारे यहाँ कुर्बानी लगी हुई है ना, कुर्बानी का कुर्बानी, यहाँ जानवरों के मुकाबले हो रहे हैं। गाय किसकी प्यारी है, बकरी किसकी प्यारी है, और ये पोर्क का गोश्त भी बिक रहा है सारे यहाँ। इधर लाल रंग के लिए क्या है, वो लाल रंग का फ़र्क ही नहीं होना, सब खाते हैं गोरे, मगर साफ़ सुथरे बहुत हैं, सफाई में इनका कोई मुकाबला नहीं है। सारे जो मेन चीज़ें थी वो 6 बजे क्लोज हो गई, ये आप देख सकते हैं। कुछ भी ये कोई बैंक वगैरह की तरफ से स्टॉल है, ये अभी बंद हो गया। अभी मैं दोबारा इधर से दिखाता हूँ आपको। ये डोनट्स बेच रहे हैं। डू यू हैव फ्राइज? खाने मैंने कोई नहीं थे, ऐसे पूछ रहा था। ये देखेंगे पूरा बार का सिस्टम है, पूरा स्टैंड है। मुझे वहाँ जाने की बैग चाहिए, वो मेरे पास है। ये साथ ही देखें एयरपोर्ट है, जहाज उड़ रहे हैं। ये लोग पूरे यूरोप से देखने के लिए आए हुए हैं, पूरा यूरोप उठ के आया हुआ है, सिर्फ इंग्लैंड के लोग नहीं हैं। कनाडा से भी मुझे इतने बंदे मिले हैं। यहाँ जब कोई शो होता है तो पूरा यूरोप आ जाता है इधर। बहुत हाई लेवल का शो है, ये पता लगता है। There we go. It's number one of time. You can let out. John McIntyre, Steve Ford, Ryan Brewster. Coming in second position is the young driver, Ailsa Noble, driving now Team of Ford. And then we have the Canadian-Belgian heavy horses being driven by David Mullen in third place. Followed by the Malala Clydesdales with Aidan Ramsey driving her father's team of 4. Followed by the young Ben, the grandson, with the Glebe View Clydesdales, all the way across the water from Northern Ireland. And in 6th place, Gavin Hope, driving a team of 4. And finally, Charlotte Young driving David Beverly Walker's American Hitchwagon with Chumley, Donald, Duke and Arthur. Straight out, straight. Guys are coming straight out. Huge appreciation for these drivers. You'll see some of them later in the unicorns later tonight. And there they go. Huge amount of work goes into this. You've got your horse to look after, you've got your harness to look after, you've got your dray to look after, and drive in the way they drive them. ये भी जी लोगों के कैंप
कारवां है, इसके अंदर पूरा रूम होता है। ये टेंट प्लस कारवां है। ये देखें जी पूरा कारवां सिस्टम, कैंपिंग सिस्टम लगा हुआ है।